So well, let's begin with the today's class, and because this is a subject very special, and we are going to discuss it, applied machine learning. It means whatever the kind of a machine learning we have already studied about. Now it is the time to really understand that where actually it is being applied, and once you would be able to understand that its application, ये कहाँ कहाँ apply की जाती है, where it is we are actually putting into, and where we are just having a such kind of a good application in the industries, ये सारी चीज़ें जब हम implement करते हैं और apply करते हैं, then we would be able to understand the actual essence of the behind the picture. So because of that, everything is fine. And if you try to understand this all, so with the help of all this kind of a Python programming and all its application, you would be able to understand in the real world how the peoples are using it well and how they are going to implement it, and what kind of good projects you can develop on that, what kind of a learning you can create, what kind of implementation you can go for. So if you see your syllabus, I'm just sharing it with you. If you see your syllabus, so in your syllabus it is well clear that if we are looking for the units, all the units are here. So under all these, if you see what we have already discussed about that in the previous lecture, the fundamental of a programming, Python for the data sciences. So now at this time, the programming language, which is Python, is going to use for a purpose of a data science. The reason behind to use this data science is what? Because whatever the algorithm you are going to implement, जो भी आप apply करने चाहते हो, जो भी आप implementation process में लाना चाहते हो, all these things are totally depending on the one thing. What is that? That is what the data. सारी की सारी story, सारी की सारी picture जो भी है, that is all behind the screen is the data. It means you are going to implement some algorithm. आप कोई algorithm लगाने वाले हैं, कोई machine learning technique लगाने वाले हैं. क्यों लगाने वाले हैं? इसलिए लगाने वाले हैं क्योंकि आपके पास में number of set of conditions हैं. Under all those conditions you want to make your machine able to understand. उन conditions के बीच में आप अपनी machine को चाहते हैं कि वो इतना perfect हो जाए and can take the decision on the basis of that. So at that time there is important that you should have a data, and data should be in such a good form that machine learning implementation can be done. तो ज़रूरी ये हो जाता है इसमें. So if you see all these units, under all these units we are going for fundamental of a programming. We should understand what kind of a library, basic library are being used, data structure, functions, numpy, matplotlib, other panda that we have already discussed and covered it. Now coming to the unit number 2, which is having the exploratory data analysis, which is called as the EDA analysis and data visualization. Because EDA analysis is somewhat related with the what data you have and what kind of a data is required, what kind of a feature you are going to extract. All these things are very important. So under all these situations, we are implementing and we are developing it, and all sort of a development is totally depending upon a EDA analysis. So that's why it is very much important to go with the EDA analysis and then find out what are the probabilistic and statistical aspects of all this. So this all related with the directly related with the exploratory data analysis and the data visualization. That's very important. So go with that. Try to understand what kind of exploratory data is there. So try to understand, try to find out the statics. What you need, you just keep it with you. Whatever you do not need, put it out. So if suppose you have thousands of rows and columns under this, how you would be able to identify that particular ANN element, any element. It might be a 32 row and 36 column, a 32, 36 column element is there which is not of use. So manually it is simple to just go through all these one and find out this is not looks relevant. But if you go for with the help of a data analytics, you would be able to put some sort of a conditions there, and under these conditions you would be able to understand that finally this particular column, this kind of a condition, this kind of a data is not required of you. If suppose you have a certain kind of a matrix, under this matrix the zeros are not required, so you can easily put your zeros out from this, and wherever the zeros will be there you can easily extract them. So this is all about the basically called as a exploratory data analytics EDA analysis, isn't it? So under these all conditions we go for and we try to find out all these, and we put all them into the form of a required, and actually it is also called EDA. It means pre-analysis of a data. It means you are making your data ready for the purpose for which you are looking for.
This is also a kind of a thing. So we'll begin with all this, and we'll keep on moving all one to one, and we'll take care of that. And that all will be available for you on our YouTube channel as well. So meanwhile, if you're missing because of any sort of issue, any kind of a problem, that can easily be taken from there as well. So coming up with the next point, and here we have a target to understand basically the workflow for the data analytics. So we are going to study with this workflow of the data analytics. Let's move on with this. So let's begin with the workflow of the data analytics. And under this situation, let's we move on with this walk, and what exactly this means, let's try to understand. So the numbers have a compelling tale to share. The trust on our ability to provide them with authoritative to clear voice Stephen Fuse. Raw data. So this is a kind of a saying initially. The numbers have a compelling tale to share. Each and every number which is being written, they have a certain kind of a story behind. They trust our ability to provide them with an authoritative and clear voice. Stephen Few. So that is a statement given by the Stephen Few. So you need to find out what actually is behind the data. Raw data aggregated is the data that is not oriented. It requires a thoughtful understanding as well as the appropriate question in order to create a sense of out of it. Many insight fails to analyze the data completely and become difficult for the stakeholder for the comprehension. Therefore, it becomes necessary for a data analyst to define and understanding data with the right side of the initial question of the standardized workflow of the different type of analysis he needs to perform. The following words are from the Jack Leaf, that element of a data analytics style, which broadly categorize various analysis fields. So that's simply showing the data which generally we collected is always in the form of a raw form. So this raw form has to be reconditioned, reshaped into the desired one, where such kind of a like data analytics is required, which can provide a data in which fashion, in which shape we are looking for. एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि सपोज दैट आई एम जस्ट टेकिंग केयर ऑफ वन कमर्शियल वेबसाइट. कोई कमर्शियल वेबसाइट है जिसपे मैं बेसिकली आई एम जस्ट टेकिंग केयर ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस मेंटेन किए हुए, एंड वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आई एम सेलिंग ऑन दिस माई वेबसाइट. वेबसाइट पे मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं over which अब इन सारे के सारे प्रोजेक्ट्स वेबसाइट्स पर इफ आई गो देयर और आई फाइंड इट आउट इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो बने हुए हैं उन सारे के सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, if a customer is coming, I mean try to find out any one thing like looking for a webcam. एक webcam को देख रहा है. So now target is what? If I have a certain kind of a data of the interested who is coming to my website, जो मेरी वेबसाइट पर आते हैं, जो ट्रैफिक मेरे वेबसाइट पर आ रहा है, उस वेबसाइट में से ऐसा कितना कस्टमर ऐसा है जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को ढूंढ रहा है, उन्हीं को तो मैं कैमरा सेल कर पाऊंगा. बट दोज पीपल्स आर कमिंग फॉर द पर्पस, दे आर हैविंग अ टारगेट टू परचेज द शूज. So unnecessarily putting my data, unnecessarily putting them a certain kind of a logic related with the electronics item is useless, and definitely that may deteriorate my own web page quality and the requirement. So over these conditions, under these conditions, it is important to understand that what kind of a data is required. So the elimination of the data, inclusion of the data, adding and the padding, and all these kind of things are important. So that's why it is called basically the EDA analysis. So descriptive data analysis is required. Therefore, we are looking for this one. So just take an example. So first of all, we are looking for exploratory data analysis. Data on segregation of a student enrolled in the same course at a college. एक example यहाँ पे लेते हैं जिसमें हम डेटा को सेग्रीगेट करने वाले हैं जो स्टूडेंट एनरोल्ड हुए हैं किसी कॉलेज में किसी कोर्स में. डेटा could be split into various categories such as numbers, gender, residency, age, race, and so on. The information summarizes the groups the data into the fixed set that describes all students, and the specific information doesn't suggest anything and only provide the specifics. Thus, it is a type of a descriptive analysis. अब सब कुछ उसके अंदर रखा हुआ है, सारे टाइप ऑफ डेटा है, सारे टाइप ऑफ कैटेगरीज हैं. Under all these categories, under all these situations, when we are talking about, जब हम इसके बारे में बात करते हैं, तो it is basically a descriptive type of data. And what we need a very specific kind of a thing for which feature we are looking for from the data. डेटा से हम जिस फीचर की बात कर रहे हैं, that only the feature should come out. वही फीचर हमारा आना चाहिए. Exploratory data analysis of descriptive data output, that is a further studies for the discoveries, pattern, trends, correlation or interrelation among the different areas of data in order to develop an interpretation, an idea or hypothesis. This is the foundation of exploratory data analysis. So if you go with this statement, it is a very wonderful statement. Analysis of descriptive data output, that is further studies for discovering pattern. डेटा का हमें पैटर्न आगे क्या होने वाला है,
कैसा डेटा आने वाला है, किस टाइप का ट्रेंड क्रिएट होने वाला है, कोरिलेशंस क्या है, उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप क्या है among different areas of the data in order to develop an interpretation and idea of hypothesis. This is the foundation of exploratory data analysis called as a EDA. In sense, it is expanding over the description data sets and trying to provide the comprehensive overview of the data. According to Diane Cook as well as the DeForest Swain, rightly refer to their book. उन्होंने अपनी बुक में ये चीज़ बताई है, EDA, a play in the sand allow us to find the unexpected and come to someone understanding about it. What a wonderful line it is being written. कितना अच्छा लिखा हुआ है कि refer to in a book a play in a sand to allow us to find the unexpected and come to the someone understanding of it. कहने का मतलब है कि ये चीज़ हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं एंड ओवर द डिस्कशन वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस. जब भी हम बात करते हैं किसी डेटा की, सो द टर्म विच कम्स EDA, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. ये जो EDA एनालिसिस है वो EDA एनालिसिस आपको आपके डेटा को जो अनओरिएंटेड डेटा है उसको किसी ओरिएंटेड डेटा की तरफ आपको कवर करता है. इट इज़ रीचिंग यू, मेक यू रीच ओवर देयर, वहाँ पहुँचाने की कोशिश करता है जहाँ पर आप अनओरिएंटेड डेटा पड़े हुए थे, कहीं आपके पास ओरिएंटेशन नहीं था डेटा का, आपका कोई टारगेट नहीं था, कुछ पता नहीं था वेयर इट इज गोइंग. अंडर दिस सिचुएशन, जब आप इस सिचुएशन में काम करते हैं, देन व्हाट यू ट्राई टू डू, देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डेटा को मुझे किस फॉर्म में चाहिए, कहाँ पे. तो इसीलिए डियानी कुक ने एंड डेफोरेस्ट ने कहा कि EDA एनालिसिस इज लाइक अ प्ले इट मीन्स सैंड. So every particle of a sand is nothing but a data, and you are trying to explore something into it. है ना, जैसे आप लोगों ने एग्जांपल देखा होगा, भाई बहुत सारा कहीं पर सैंड है और सैंड में बच्चों को छोड़ दिया था, तो बच्चे क्या करते हैं, सैंड में कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं. एंड मेनी ऑफ द टाइम दे विल बी एबल टू फाइंड आउट देयर सम स्टोन्स. कभी कुछ लोगों को स्टोन्स मिल जाते हैं एंड शेल्स आर देयर, वो लोग वो भी निकाल लेते हैं. सो मैनी ऑफ द थिंग्स आर देयर विच इज़ unexpected and comes to the understanding and they try to make something from it. So data is like that, because what we are data, actually we are the data one. और हम डिफरेंट रीजन्स के, डिफरेंट एज ग्रुप के, डिफरेंट एजुकेशन सेक्टर से अलग अलग लोग जितने भी हैं, वी ऑल आर द डेटाज. हम सारे के सारे डेटाज हैं. अंडर दिस सिचुएशन, जब हम खुद स्वयं डेटा हैं अपने आप में, तो अंडर दिस सिचुएशन द पर्सन हु इज लुकिंग फॉर वेरी स्पेसिफिक एंड समथिंग स्पेशल इज लुकिंग फॉर व्हाट, वो कोशिश कर रहा है कि इट इज लुकिंग टू फाइंड आउट समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग एंड मे बी ऑफ यूज. So that's why it is basically called as an exploratory data analysis. You look for exploratory data analysis. You are trying to explore the data. That's what an important point. So we go with this and we try to understand that what exactly we are trying to make it, and hope so you all are getting this one. You are understanding this one all. So this is what the main focus is, not always to result a problem statement, rather to look at various elements of a data in the first place in order to know it intuitively. Example, a typical EDA application studies the behavior of the traffic pattern in cities around the world. Although the data gathered may vary in terms of its nature, various surprising discoveries may be discovered, like the frequency accident that occurs at the traffic signal, the amount of a pollution that is produced on the daily basis because of the exhaust emission from vehicle, and even the rates of a traffic congestion. That's an important one. So this is an example, kind of an example has been taken, and this example is basically giving an idea. ट्रैफिक पैटर्न है किसी भी शहर का, बड़ा सिंपल सा एग्जाम है, लाइक स्टडीज बिहेवियर ट्रैफिक पैटर्न सिटीज अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में आप ले रहे हैं. ऑल्दो द डेटा गैदर्ड मे वेरी, जो भी आप डेटा ले रहे हैं अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग सिटीज़ का, इन टर्म्स ऑफ नेचर वेरियस सरप्राइजिंग डिस्कवरीज मे बी डिस्कवर्ड, लाइक द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सीडेंट्स दैट अकर्स एट द ट्रैफिक सिग्नल, the amount of a pollution that is produced on a daily basis because of the exhaust emission of the vehicle, even the rate of a traffic congestion and a तो कोई एनालिसिस हो सकती है जिसमें ट्रैफिक सिग्नल्स पे होने वाले एक्सीडेंट्स की बात की जा रही है, कहीं पे पोल्यूशन की बात की जा रही है, कहीं पर इसकी ट्रैफिक कंजेशंस की बात की जा रही है. The outcome of a real issue isn't always determined with these findings. The information gathered alongside other data may be helpful to determine the result. अब आपका जो मेन फोकस हो सकता है इनमें से कहीं एसोसिएटेड हो. Because if you are talking about the accident, तो definitely traffic may be a part of it. भाई एक्सीडेंट अगर डिस्कशन कर रहे हैं तो ट्रैफिक एक पार्ट हो सकता है, इसी तरीके से पॉल्यूशन का इफेक्ट भी ट्रैफिक के ऊपर हो सकता है. इसी तरीके से ये चीज़ भी देखी जाती है कि कितना कंजेशन है, कंजेशन का भी फर्क पड़ सकता है बाकी अदर फैक्टर्स पे. सो मैनी फैक्टर्स आर देयर. सो दैट्स व्हाई दिस एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस वेरी मच इम्पॉर्टेंट.
सो वेल, कैसे हैं जितेंद्र जी? हाउ आर यू? सो वेल, जितेंद्र जी क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बढ़िया। दैट्स अ नाइस वन। तो हम लोग ने अपनी डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था, और हम लोग यहाँ पे ईडीए के बारे में पढ़ाई कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। सो रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल विद यू एंड एज वेल एज द कंटेंट आई विल बी शेयरिंग। सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस ईडीए एनालिसिस, किस तरीके से ईडीए एनालिसिस की जाती है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस। एंड ईडीए को बेसिकली अगर मैं इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो इट इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ अ थिंग जिसमें हम यूज़ करते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। मतलब हम यहाँ पर कोशिश ये करते हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, कहीं से भी आया है, तो उस डेटा में से हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे लिए यूजफुल और अवेलेबल फीचर्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ईडी एनालिसिस कहते हैं। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया गया था। यहाँ पर एक जेब्रो एंड स्वयं थे। हाँ हाँ। सो इसमें बेसिकली एक डेब्रो एंड स्वयं थे, मैं इसको शेयर कर देता हूँ। उन्होंने बड़ा अच्छा इसका एग्जांपल लिया था एंड ही टोल्ड अस, उन्होंने बताया कि ईडी एनालिसिस का मतलब होता है एक्सप्लोरेटरी। आप एक्सप्लोर कर रहे हो डेटा को, एक्सप्लोर कर रहे हो, और एक्सप्लोर करने के बाद में यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द वैल्यूएबल फीचर्स ऑफ इट। आप ये कोशिश करते हो कि इसके इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल फीचर्स हमें मिल जाएं। एंड अंडर दिस सिचुएशन आप व्हाट यू आर ट्राई टू डू, आप कोशिश ये करते हो कि कोई भी फीचर किसी एक दूसरे से कनेक्टेड हो दैट कैन बी यूजफुल, दैट मस्ट बी अवेलेबल विद मी एज वेल। तो वो मेरे साथ अवेलेबल होना चाहिए। सो ऑल अंडर दिस सिचुएशन वी ट्राई टू डू इट, हम कोशिश ये करते हैं कि एक्सप्लोरेटेड डेटा एनालिसिस के अंदर उन्होंने एग्जांपल में एक चीज़ बोली कि जैसे बच्चे कभी कभी सैंड्स में खेलते हैं, बहुत सारी सैंड है। सो द एवरी पार्टिकल ऑफ अ सैंड, सैंड का जो भी पार्टिकल है वो पार्टिकल अपने आप में क्या है, वो एक डेटा है। एंड यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर, आप सैंड्स में यू आर पुटिंग योर हैंड इनटू इट एंड ट्राइंग टू एक्सप्लोर इट कंटिन्यूअसली। आप इसको कंटिन्यूअसली एक्सप्लोर करते हैं एंड यू आर एबल टू फाइंड आउट समथिंग। कभी किसी को स्टोन मिल गया, कभी किसी को कोई शैल मिल गया, दैट्स ऑल यूजफुल। अच्छा ये चीज़ मिल गई, काम में आ गई। So it is like a data is like a sand particles and you are trying to explore something into it and you are able to find out something and that can be utilized. So if you are looking for a main focus and main problem and we are exploring the data and it might be possible some supporting agents will be available, तो supporting agents भी वहाँ पर आ जाते हैं and that can help us a lot to really meet out our objective. ये काम भी हम यहाँ पर कर लेते हैं. So that is a somewhat a good kind of a thing happens there. So under all this situation we try to make it. So that's I want to say. तो इसमें if anyone has any sort of question, कोई बात समझ में आ रही हो तो बताइए, because as we have already talked about, unit 1 is very simple, we have already discussed many times and there is no issue, easily the things are happening there and we don't have any like a kind of a challenges there, no challenges हैं. तो under the situation the numpy, use of python, all these kind of things are available. हाँ, once we will go for EDA analysis, जब हम EDA analysis के लिए जाएंगे then हम we would be able to really work on everyone, हम इन सब पर काम करेंगे and we'll try to work on this. So many kind of a data analysis are there. So we have a target to go for exploratory data analysis. इसी तरीके से इन्फ्रेंशियल एंड क्वालिफाइड स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड क्वालिफाइड डेटा एनालिसिस भी आपका रहता है, प्रोडक्टिव डेटा एनालिसिस भी आपका रहता है, इसमें कॉजल डेटा एनालिसिस भी रहता है, मैकेनिस्टिक डेटा एनालिसिस भी रहता है. सो मैनी ऑफ द डेटा एनालिसिस आर देयर बट वी हैव ओनली अ टारगेट टू गो विद द EDA analysis. So we are extending our topic and discussion with the EDA analysis as well. So this we basically your voice is bit low. Yeah, I'll definitely share all kind of a contents with you, the content and as well as content and as well as, just give me a little time, I'll share everything. Yeah, I'll share every
analysis. I'll share the complete content with you, and don't worry about that. That will be available. Okay. So this is basically the target I'm going to discuss with you, and I'm going to share with you. So I have started this EDA analysis, and I have just given a completely recording of this one. So you all may get it. Just taken the EDA analysis because the unit number 1, the NumPy, data visualization, pandas, that you have all studied. आपने वो सारा का सारा पढ़ा है. So I'm going to give you सारा का सारा हम already discuss कर चुके हैं, and because we have already discussed, so that I'm going to give again the contents to you. So you go through that, and even that you find out any sort of a difficulty in this one, will definitely capture it. ठीक है. तो अगर कोई difficulty है, कोई परेशानी है, तो हम इस टॉपिक को रीडिस्कस कर लेंगे. अदरवाइज all the topics have been covered. सारे के सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं आपके. You have already studied all them. ठीक है. So we are starting here with this EDA analysis. I'm going to give the content and sharing with you. Try to understand, try to read it out. पढ़िए, देखिए, और देखने के बाद में if you find a difficulty, you are free to ask the questions. You are free to discuss with me. And not only we'll go for the EDA analysis in terms of some theoretical aspect, we'll also go for having very good. We're going to have something related with like data analytics and work. I'm putting my discussions over here. मैं यहाँ पे discussions को close कर रहा हूँ. If you have any sort of a question, you may ask. आप पूछ सकते हैं. कोई discussion आपने करना है, वो आप मेरे से बात कर सकते हैं. और आपको मैं content share करता हूँ आज. You read it out. And if you find the difficulty of the content, so please discuss with me. Or anything else?